A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. सर का कैमरा कौन सा है? Namaskar. Welcome to this very special program on Aapka, Vishwas, Hamara, Prayaas. As you all know, this is a very, very popular program of this channel, and we find it a two-way communication in a sense that whenever you call us and whenever you are putting us a question to us, we really feel very happy. Now, this is the opportunity to welcome all of you in this week where we are having lots of festivals. So I would like to welcome all the regional centers, all the study centers, all our academic counselors, learners, prospective learners, and everyone. But before welcoming, after welcoming all of them, I have the great privilege of welcoming our Pro Vice Chancellor, Dr. Kiran Hazarika ji, who is amidst us, for gracing this occasion on this very special program on Aapka, Vishwas, Hamara, Prayaas. And we have also the opportunity to welcome Dr. Bharat Bhushan, who is the Director, Student Support Services Center. And this is a great opportunity indeed. And once again, I would like to take this opportunity to welcome all of you here in this very popular program, Aapka, Vishwas, Hamara, Prayaas. And it's, as I told you, this is a two-way interactive program, and the telephone numbers for interacting with us is going to be scrolled on the TV screen
wherever you are watching. We are on 3-4 different channels. We are on EMPC Live, Facebook Live. We are on YouTube Live. We are on Swam Prabha 17 channel. And this is the Gyan Darshan. You are watching us on the Gyan Darshan also. So this is the, you might be finding this is the place, but let me first request our Pro Vice Chancellor, Dr. Kiran Hazarika, sir, Honorable Pro Vice Chancellor, and we welcome you, sir, to this very channel, and this is a very, very popular channel of the student, and we would like to hear from you, sir, that what is your message for the students, those who are watching us, sir? And this program is watched by not only students, the prospective learners, their parents, the regional centers, the study centers, and many more, sir. Over to you, sir. नमस्कार टू ऑल सबको नमस्कार ये जो प्रोग्राम है आज हमारे जो स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है और स्टूडेंट्स की सो मेनी क्वेरीज है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम तो आज जितने भी दर्शक है दोस्त हु आर पार्टिसिपेंट्स है व्यूइंग द प्रोग्राम्स तो मैं सबको विशेष रूप से दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं और फेस्टिव मूड है ऑल्दो यू आर वाचिंग द प्रोग्राम तो इसलिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं नॉर्मली हमारे दो यू नो अबाउट द इग्नो फर्स्ट ऑफ थिंग दैट यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट you have been enrolled in the world largest university, that is open distance university. This is IGNOU, Indira Gandhi National Open University. So we have 3.5 million students all over the country. Even we have enrollment in abroad also, India abroad also in 15 countries. This year we have enrolled more than 3,000 students from all abroad of the country. So this is a prestigious institutions and we are maintaining the quality education especially. Therefore, this is the only university who providing the PhD programs in various subjects. Already this time also we advertise for 36 disciplines for PhD program. So you should be proud of yourself that you are be part of this institution, being a student, because students is our main targeting point, because this is our goals also. The students, our activities depend upon the students. So students should be alert. अभी देखिए जो एग्जाम रिलेटेड जो भी विविध प्रकार के जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज दिस इज फॉर योर बेनिफिट हम आज यहाँ बैठे हैं. तो क्या है कई हम नॉर्मली स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे समय में बताया जाता है कि स्टूडेंट ऐसा इग्नो की कई समय रिजल्ट में उनको लेट हो जाती है या कोई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं. नॉर्मली प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि मान लीजिए हमारी ओर से नहीं, हमारी एक प्रोग्राम शेड्यूल है. सो यू शुड गो थ्रू द प्रोग्राम शेड्यूल. और जो प्रोग्राम शेड्यूल आपको दिया गया किस समय एडमिशन करना है और किस समय आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, किस समय आपका एग्जामिनेशन असाइनमेंट जमा करना है, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन ऑन टाइम एग्जामिनेशन आप अप्लाई करिए, फिर आपको प्रोग्राम शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है एग्जामिनेशन को एज पर. तो फिर एग्जाम डे ऑन टाइम रिजल्ट है. अगर इसमें आपकी थोड़ी गलती हो गई है, ऑन टाइम यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर द एनरोलमेंट और अप्लाइड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, तो इससे आप बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो जाते हैं. तो इसीलिए मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे जो गाइडलाइंस है, हमारी जो पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू आप जाइए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे होने वाली नहीं है. तो इस बड़े संस्थान में आप सबका मैं सबसे पहले दोबारा मैं स्वागत करता हूं और आप विविध प्रश्न जो आपके अंदर हैं वो प्रश्न का पूरा जवाब आपको मिल जाने वाला है. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने बड़े ही कम शब्दों में यूनिवर्सिटी को समेटने की कोशिश की. आपने ये बताया कि ये देश विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और न ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का भी आपने जिक्र किया. करीब 3.5 मिलियन विद्यार्थियों की आपने बात की. आपने फुटप्रिंट
फॉरेन कंट्रीज में है उसकी भी चर्चा की, और आपने ये भी बताया कि हमारे पास किस तरह से फॉरेन में करीब 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे विदेशों में भी हमारी इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी हमसे साझा की। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन वेलकम डॉक्टर भारत भूषण, very good friend of mine and a very senior officer of this university, and he is presently holding the position of Director SSC. Sir, since this program is basically, you have focused Aapka, Vishwas, Hamara, Prayaas on examination related issue. Now tell me sir, examination is always giving a fear to us. I hope, first of all, why examination? Why student not be fearful of all this examination? Just a very brief on that, sir. Then I will come to the queries of the students that comes always in their mind. Over to you, Dr. Bharat Bhushan. Thank you, Dr. Prasad. And I, my own behalf and university behalf, I also extend a very happy Deepavali, Bhai Dooj and Govardhan for all of you who are listening to us. Secondly, I would like to invite all the stakeholders, students, parents, and whosoever want to ask any question, not only related to examination, but related to university, that is Indira Gandhi National Open University, the world's largest university. Any question, we are here to resolve it. जैसे अभी डॉक्टर प्रसाद जी ने बताया कि एग्जामिनेशन एक fearsome मैटर है जी, तो सर मैं इस बात को और कर दूं कि जहां तक इम्तिहान की बात है तो इम्तिहान से तो भगवान भी डरते हैं। सही कह तो रहे हैं। इसलिए डरते हैं कि एग्ज़ाम ही होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम को तैयारी हमारी ठीक ठाक है, हमने जो सिलेबस है हमारा वो पढ़ा है अगर, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात है, हम एग्ज़ाम करते हैं और जैसा अभी प्रो वाइस चांसलर सर ने बताया कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हम सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड करते हैं, सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और वो जो स्टडी मटेरियल है उन्होंने क्वालिटी की बात भी की कि क्वालिटी हमारा मेन कंसर्न है, मेन स्टे भी है। और जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है जो हमने अर्न की है आज तक, वो उसका जो मेन स्टे है वो हमारा क्वालिटी स्टडी मटेरियल भी है। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे ध्यान से, केयरफुली, इन डिटेल, तो फिर आपको एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी है जी। सो एग्जामिनेशन के बारे में आपने बहुत दूर की बात कही कि शायद भगवान भी संभवतः अपनी परीक्षा से डरते हैं। यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब हम टर्म्ड एग्जामिनेशन की बात कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सत्रांत परीक्षा कहते हैं, क्या है ये सत्रांत परीक्षा और कौन सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सत्रांत परीक्षा में, क्या हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, या सत्रांत परीक्षा तक आने के पहले की क्या वैधानिक उनकी जरूरत है कि ये करेंगे तभी आप ये कर पाएंगे, और उसके लिए कैसे क्या तैयारी करनी पड़ती है? हेलो, हाँ सो जी। ये हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या सत्रांत परीक्षा है, क्या किसके लिए है, कब होता है? या So, call from Karnal. Karnal, we welcome you. आपका स्वागत है और हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके प्रश्न आप जो पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछें। जी जी सर, मैं यहाँ पर जो है सीमा देवी के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। मैं विजय बात कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर के बिहाफ से मैं आपसे बात थोड़ी ऊंची आवाज में, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी और ऊंची, हाँ बताएं, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं अपनी सिस्टर सीमा देवी के नाम बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा क्वारी ये है कि मैंने सबसे पहले एग्जाम फॉर्म फिल किया है 2 सितंबर को। देन उसके बाद भी सर मुझे मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया है। जहाँ तक मैंने गाइडलाइंस पढ़ी थी ना सर, उसमें लिखा था कि अगर आप समय रहते एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको आपकी प्रेफरेंस का एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा जी। लेकिन मैंने सबसे पहले एग्जाम फॉर्म फिल किया 2 सितंबर को, रिलीज के 2 दिन बाद एग्जाम फॉर्म फिल किया। देन उसके बाद भी सर मुझे मेरे जिले में एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया, 60 किलोमीटर दूर दिया गया है। मेरा 7 किलोमीटर या 60 किलोमीटर? जी, जो मेरा करनाल रीजनल सेंटर है वो इस बात को नहीं सुन रहा है। एक वन लाइनर
जवाब दे रहा है कि योर सेंटर कैन नॉट बी चेंज्ड, बस एक ही जवाब आ रहा है बार बार मेल पर। और मैं तो लड़का हूँ सर, चला भी जाता है, लेकिन मेरी सिस्टर है और लगातार इवनिंग में एग्जाम है उनके। कई एग्जाम ऐसे हैं जैसे कि बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है, तो हम वहाँ चले तो जाएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर वहाँ पर पहुँचना सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बस की सुविधा नहीं है सर वहाँ से जी। तो सर मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरा एग्जाम सेंटर मेरे जिले में दिया जाए सर, जो मैंने प्रेफरेंस दी थी सर जी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें करनाल से फोन किया और आपने अपनी समस्या का जो है को बताया है। आपने बताया कि 2 सितंबर 2023 को आपने फॉर्म भरा है और किसी कारणों से आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके मन मुताबिक आपके गृह जिले में नहीं आकर के कहीं उससे दूर चला गया है। इस तरह की समस्याओं का डॉक्टर साहब किस तरह से निवारण करते हैं और कैसे हम इन तरह की चीजों को देखते हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। सर देखिए, जब जहां तक एग्जामिनेशन फॉर्म की भरने की बात है, ये तो इन्होंने ठीक कहा कि इन्होंने 2 सितंबर को ही भर दिया था जी। और 2 सितंबर भरने की जो इनको फायदा होता वो ये होता कि इनके चॉइस के हिसाब से एग्जाम सेंटर मिल जाता जी। लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हुआ इनसे कि 60 किलोमीटर की बात कर रहे थे या 7 किलोमीटर की बात कर रहे थे। अगर 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर इज नॉट ए डिस्टेंस एज फार एज ज्योग्राफिक लैंडस्केप इज कंसर्न। अगर 60 किलोमीटर भी है तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो इनका कोर्स रहा होगा उस कोर्स के लिए इनके जिले में या इनके आसपास जो इनका पसंद का सेंटर होगा उसमें जो डिजायर्ड नंबर है, जो मिनिमम नंबर होता है एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड करने के लिए, वो नंबर फुलफिल नहीं हो रहा होगा। सपोज 80-100 अगर एक ही बच्चा होगा तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिलीवर करने होते हैं और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। रही बात कि मेरा एग्जाम अब उनको अलॉट हो गया, अब ये चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, सेम सिटी में, सेम डिस्ट्रिक्ट में स्टडीज जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज होने का प्रोविजन है नहीं। अगर किसी भी कारणवश अगर इनका कोई स्टेट चेंज हो जाता, ये इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में होते, तो इनकी जो रिक्वेस्ट है वो हम एकोमोडेट कर लेते। लेकिन अब ये क्योंकि सेम स्टेट में है, सेम डिस्ट्रिक्ट भी है, विदिन स्टेट में कुछ समस्या है, विदिन स्टेट में थोड़ा सा दिक्कत है कि नहीं हो पाएगा। तो अभी तो क्योंकि ये बता रहे हैं कि मेरी सिस्टर है, तो 60 किलोमीटर का तो मुझे एक यही वजह है कि उनका जो कोर्स है उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स में एक मिनिमम नंबर चाहिए होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिख दीजिए, अभी एग्जामिनेशन में टाइम है। एक मैं आपको ईमेल बता रहा हूँ, डायरेक्टर ssc@ignou.ac.in। अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं, इस पर एक रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए और जो आपने बात कही है ये भी आप डिटेल्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे, अगर ये 60 किलोमीटर है और ये पैरामीटर नहीं है कि जो एग्जाम सेंटर हैं उनके लोकेशन पर हैं, तो हम इसको चेंज कराने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर आप को बेयर करना होगा, आप उसी एग्जाम सेंटर में आप अपने एग्जाम दिलवाइए। दूसरी बात इन्होंने की, एग्जाम्स हमारे डेली हैं। देखिए, एग्जाम्स की बात ये रहती है कि एग्जाम तो डेली ही रहते हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एग्जाम के बाद 3-3, 4-4 दिन छुट्टियां मिलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सब सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आए हैं और जब हमने एग्जाम दिए सर, हमारे भी डेली एग्जाम होते थे। सुबह एग्जाम, शाम को प्रैक्टिकल, सुबह एग्जाम, शाम को प्रैक्टिकल। तो ये बात तो डॉक्टर साहब मैं ज्यादा जायज नहीं मानता हूँ। Thank you, Dr. Saab. And once again, just to reiterate what you said, sir, for others listener to follow, is that university is always trying to be closer to the students' interest. And in this particular case, the caller from Karnal has just said, and as Director SSC has just informed, that आप kindly Director DIRECTOR, Director SSC @ignou.ac.in को अपनी रिक्वेस्ट भेज दें। संभवतः डायरेक्टर एसएससी से हमारा आग्रह होगा कि आप इस स्टूडेंट के लिए जो भी बन पड़ता है विश्वविद्यालय की तरफ से हम कोशिश करेंगे। नेवरदलेस, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम करनाल। सो सर, मैं बात आपसे कर रहा था कि जो सत्रांत परीक्षाएं जो होती हैं, क्या ये सत्रांत परीक्षाएं सबके लिए है या किन के लिए है या कैसे आयोजित होती है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो जब तक हमारे पास और कॉल नहीं आती है, हम धीरे धीरे एग्जाम्स के, क्योंकि आज एग्जाम स्पेशल प्रोग्राम है हमारा
और एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें अपने स्टूडेंट्स को हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम हैं ये किन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो मैं विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताऊं कि इग्नो एक बहुत बड़ा सिस्टम है और जहां तक एग्ज़ाम्स की बात है, जब हम प्रोग्राम की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है और एग्ज़ाम कंडक्ट करने में भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें जो सेमेस्टर बेस्ड हैं और जो नए सीबीएसई हमारे सीबीसीएस के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बेस पर जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं इन कंप्लायंस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो हमारे सेमेस्टर बेस्ड हैं। कुछ कोर्सेज हमारे एनुअल बेस्ड हैं, जैसे जो पीजी कोर्सेज हैं हमारे वो एनुअली उनके एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अपने कोर्स के लिए एलिजिबल, आपने पूछा एलिजिबल कौन होते हैं? अगर उनका सेमेस्टर बेस्ड है तो उनका जब वो एग्जामिनेशन एडमिशन ले लेते हैं तो उसके 3 महीने के बाद उनको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। हर साल सितंबर में और मार्च में विद्यार्थियों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और तकरीबन इसी वक्त हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए भी इन्विटेशंस अपने विद्यार्थियों के लिए डालते हैं। तो ये काम विद्यार्थी जब कर लेते हैं तो दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन। और टर्म एंड एग्जामिनेशन हम साल में 2 बार कराते हैं, एक हम जून में कराते हैं और एक दिसंबर में कराते हैं। और जो जून और दिसंबर के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन हैं, ये 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो वजह है वो यह भी है क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम ड्यूरेशन है सर, वो जनरली जो कन्वेंशन सिस्टम है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कई विद्यार्थी अपने क्योंकि वर्किंग भी हैं, अगर वो विद्यार्थी चूक जाएं किसी वजह से कि जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, उस ड्यूरेशन के अंदर रहते ही उनको अपने सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड जस्ट टू अगेन the listeners or the learners or the viewers that for becoming eligible for term and examination, appearing in term and examination, it is necessary for the learners to submit the prescribed number of assignment at the study center, because submission of assignment is a prerequisite for appearing in the term and examination. So that is mandatory what Dr. Bharat Bhushan ji has said. So this much I want to add, and then I want to come to Professor Hazarika sir. That sir, you are coming from a conventional mode of university. And you are finding that examinations were conducted in those universities also. And examinations are being conducted at IGNOU kind of university, which is very, very vast. So what kind of difference you find, sir, in terms of students' benefit? स्टूडेंट के ख्याल को रखते हुए, स्टूडेंट के हित को ख्याल में रखते हुए यह सिस्टम उस सिस्टम से कितना अलग है, कितना मैं इस प्रश्न पे आता हूं सर। एक जलंधर से कॉलर हैं। ठीक है। हेलो, नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं बीएससीजी कोर्स से विकास मिश्रा बोल रहा हूं सर। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि 3 साल मैं 3rd ईयर में हूँ सर अभी, बट मैंने एक भी ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं भर पाया सर, और कोई भी सेंटर पे मेरा अभी तक नाम नहीं आया। तो मैंने दिल्ली से, फिर मैं अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ जलंधर में, तो वहाँ ट्रांसफर करवा लिया हूँ। लेकिन सर वहाँ मैं स्टडी सेंटर पर भी अप्रोच किया, उनको भी कुछ आइडिया नहीं है कब होगा प्रैक्टिकल एग्जाम बीएससीजी का, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। 3rd ईयर में हूँ, थोड़े एग्जाम तो दे चुका हूँ काफी, लेकिन प्रैक्टिकल एक भी नहीं दिया हूँ सर। थैंक यू सर। इस लर्नर की एक दूसरी व्यथा है, ये 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, अपनी सरकारी नौकरी या किसी नौकरी की व्यस्तता के कारण इन्होंने अपना लोकेशन चेंज किया है, जलंधर में है, और इन्होंने जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर और प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जब ये पता करना चाह रहे हैं, शायद इनको कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर रही, ये कोई वजह नहीं है जी कि स्टडी को कंप्लीट करने में ये कोई बाधक है, ये कोई बाधक नहीं है जी। तो इनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम इनका रह गया है, उसमें जो इस वक्त इन्होंने अपना रीजनल सेंटर चेंज कराया होगा जी, जो रीजनल सेंटर चेंज कराया है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे रीजनल सेंटर्स की होती है जी जी। और रीजनल सेंटर अगर इनका चेंज हो गया है तो अपने रीजनल सेंटर को ये कांटेक्ट करें, और जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट होंगे, अभी टर्म एंड एग्जामिनेशन
टर्म एंड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही हम जो प्रैक्टिकल्स की जो डेट शीट है वो भी हम शेयर कर लेते हैं कंसर्न रीजन सेंटर की वेबसाइट पर। फिर भी इनको कोई अगर दिक्कत आती है तो मैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक ईमेल हमें लिख दें directorssc@ignou.ac.in और जो इनकी क्वेरी है ये मुझे लिख दें, लेकिन इनको ये इंश्योर कर लें लिखने से पहले कि इनका रीजनल सेंटर चेंज हो गया है। अगर रीजनल सेंटर चेंज नहीं हुआ तो रीजनल सेंटर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड आई विल कम बैक टू प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती है उसका आयोजन की पूरी जिम्मेवारी आपके क्षेत्रीय केंद्र की होती है। आपसे आग्रह, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपसे आग्रह है कि अपने क्षेत्रीय केंद्र को जरूर एक मेल करें, और क्षेत्रीय केंद्र को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्षेत्रीय केंद्र खन्ना है तो आपको सिर्फ rc@ignou.ac.in लिख करके आपको एक पत्र भेजना है, एक मेल भेजनी है, और उस मेल पे आपको आपके हिसाब से आपकी जो मदद के लिए आपके जवाब आ जाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो directorssc@ignou.ac.in पे भी अपने कंसर्न को साझा जरूर करें, लेकिन इससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका क्षेत्रीय केंद्र में बदलाव या चेंज हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो अभी भी वक्त है कि आप अपने रीजनल सेंटर चेंज के लिए रिक्वेस्ट अपने पुराने क्षेत्रीय केंद्र से करें और वो आपका क्षेत्रीय केंद्र का ट्रांसफर करेंगे। मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं सर के पास आना चाहता हूँ, समकुलपति साहब के पास, और मैं जानना चाहता हूँ सर कि हम लोग सब सर पढ़े कन्वेंशनल सिस्टम में, आप तो सर उसके बड़े कर्ता धर्ता में थे, आप उसके थे। अब कैसा फर्क देखते हैं सर यहाँ के विद्यार्थियों में और वैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे की कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग, लर्निंग और एग्जामिनेशन होती है? या सर, वेल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम। वन कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम वेयर वी कैन सीट फिजिकली एंड कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो फिजिकली, एंड ये है दिस इज अनकन्वेंशनल। IGNOU is an open distance learning institutions, higher education institution. नॉर्मली क्या है, कोई भी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन लेता है तो इसमें हमारा एक तो है 3 सिस्टम है। एक तो हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता है, फिर एवोल्यूशन करना पड़ता है, फिर असेसमेंट करना पड़ता है, और इससे पहले भी एक हम एनालिटिकल सिस्टम देखा जाता है। आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न भी आया था कि आपने कहाँ किस सब्जेक्ट में कहाँ एडमिशन लिया और कहाँ अप्लाई किया है। जैसे प्रश्न अभी आया था कि वहाँ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से भी हो सकता है कि वो सेंटर उनको अलग जगह में दिया गया है। तो ये है कि हमने देखा है कि क्योंकि इग्नो में वो एनालिटिकल स्टडी जरूर होती है बिफोर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, ये बहुत एक जरूरी चीज़ है। नॉर्मली कन्वेंशनल में आप एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप जा सकता है। आपका जो टीचर्स खुद कंडक्ट कराते हैं आपकी एग्जामिनेशंस की, आपने क्लास भी लिया, उसने खुद एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा है, कि वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप बात कर सकता है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने ये सेल्फ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप खुद भी एक वो स्टडी मटेरियल पर के खुद एक टीचर्स का जो रोल है, हम एक दूर शिक्षा दूर से ही आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। वो मटेरियल पढ़ के आपको उसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। आपकी स्मृति में केवल इग्नो रहेगी, इग्नो आपकी गुरु है। हाँ, कोई दूसरे गुरु रहेंगे नहीं। हाँ, समटाइम्स इवन वी आर कंडक्टिंग सम काउंसलिंग ऑल्सो, क्योंकि कुछ क्लासेस इन सैटरडे संडे या कुछ प्रोग्राम है जो रीजनल लेवल पे होता है, आरसी रीजनल सेंटर्स पे। तो इसी हिसाब से आप लोग देखिए तो मेरे ख्याल से हमारी जो इग्नो में हमने जो देखा है इमीडिएटली नियरली मैं 1 साल का होने वाला हूँ, तो इसमें हमने देख रहा हूँ कि यहाँ का एग्जामिनेशन कंडक्टिंग सिस्टम इज वेरी वेल, और टोटल ऑनलाइन सिस्टम यहाँ ऑनलाइन सिस्टम बिंग अडॉप्टिंग हियर, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स व्हेन अराइजेस देन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट थ्रू। अभी जैसे अभी दोनों हमारे डायरेक्टर साहब ने भी अपने ये बताया कि जिसमें कुछ भी कॉम्प्लेंस है, कोई भी क्वारी है, यू कैन डायरेक्टली राइट, जो इग्नो के मेल पे भी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो
स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के, स्टूडेंट के सभी प्रकार के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वी हैव द सिस्टम मैकेनिज्म दैट इज स्टूडेंट सर्विस सेंटर्स. सो कोई भी क्वारी आप यहाँ कर सकते हैं. So thank you very much, sir. Very lucidly you explained that this is a very different system where we are really concerned about the students' concern, and we try to address to those concerns, those minute concerns also. So we thank you very much once again, sir. And जैसा मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, शायद समय कम पड़ जाए, लेकिन इस प्रश्न पे आने से पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और छोटे से इस अंतराल के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या फॉर्म भरने की कोई फीस होती है. इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा विराम लेना चाहेंगे और फिर अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने प्रश्नों के भी, जो आपके मन में संशय है, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी परीक्षा संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्न को इकट्ठा करके रखें और हमारे दिए गए नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं उस पे आप संपर्क करें. आपका और आपके प्रश्न का स्वागत करेंगे. मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद. Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism New Media Studies. Here in the School of Journalism New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in a distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for Namaskar, welcome back. And really it's indeed pleasure to welcoming you back again after the break. आपका विश्वास हमारा प्रयास
के 28वें संस्करण में हम अपने सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। और हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हम आपसे एग्जामिनेशन से, परीक्षा संबंधित सारी जानकारी का हम ब्यौरा रखेंगे और आपसे उसकी जानकारी साझा करेंगे। आपसे मेरा सिर्फ एक आग्रह कि आपके स्क्रीन पे दिखाए गए हमारे टेलीफोन नंबर्स पे आप जरूर हमसे संपर्क करें। हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने प्रो वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर किरण हजारिका साहब का, डायरेक्टर एसएससी डॉक्टर भारत भूषण जी का। और जैसा हमने आपसे कहा कि अब आपके पास बहुत सारे यक्ष प्रश्न आएंगे, जिसका पहला एक यक्ष प्रश्न है कि अगर कोई विद्यार्थी एलिजिबल हो गया, कि उसने असाइनमेंट कर लिया, असाइनमेंट करने के बाद कैसे फॉर्म भरेगा, कहाँ फॉर्म भरेगा और किसको उस फॉर्म को भेजेगा, इसकी 3 जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हम एलिजिबल हो गए, हाउ टू अपीयर हाउ टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म, whom to submit it and how to submit it. Sir. देखिए, जहाँ तक एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की बात है, हमारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हैं और अपना कोई भी कोर्स इग्नू से कर रहे हैं, उनसे सभी से मेरी ये बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि वो हमारा प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ा करें जी। प्रोग्राम गाइड, जैसा अभी प्रो वाइस चांसलर साहब ने कहा, जो स्टडी मटेरियल है उसका भी जो बेसिक स्टे है वो ये है कि वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ इवेलुएटिव एंड सेल्फ रेगुलेटिव हैं जी। इनको इसी तरह से हमारे प्रोग्राम गाइड भी हैं। प्रोग्राम गाइड में यह सारी जानकारियां बहुत डिटेल में लिखी हैं कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कब जमा करना है, असाइनमेंट कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, ये सब जानकारियाँ हमारी प्रोग्राम गाइड में लिखी होती हैं। इसके साथ साथ जब आपने बताया कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो अभी क्वेश्चंस है वो ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे जमा करना है। सभी विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हैं उनको ये मालूम होगा कि जो हमारे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो डॉक्टर साहब ऑनलाइन ही हम सबमिट करते हैं जी। और स्टूडेंट कॉर्नर है हमारा, जो इग्नू का जो पोर्टल है, वेब पेज, उसमें एक लिंक है, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। उसमें आप हिट करेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। जिन जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं वो आप उनके कोर्स कोड भर दीजिए, प्रोग्राम कोड भरिए, वो सेल्फ इंस्ट्रक्टेड है, उसमें पता लगता है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए आपने बताया कि कुछ फीस वगैरह है जी। तो यह हमारे विद्यार्थियों को मालूम भी होगा कि पर कोर्स जो हम भरते हैं उसके लिए 200 रुपये एग्जामिनेशन फीस होती है। अगर आप 4 कोर्स भर रहे हैं तो आपको 800 रुपये देने हैं, 3 भर रहे हैं तो 600 रुपये देने हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहती है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो उसके लिए इंतजार ना करें, क्योंकि जैसा अभी जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन फॉर्म भर नहीं पाए तो अभी वो लेट फी के साथ एग्जाम फॉर्म भरेंगे और वो लेट फी काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो उससे बचने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पहले ही भर देना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको लेट फी के से बच जाएंगे, दूसरा जो एंड टाइम में जब आप लास्ट आवर्स में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने लगते हैं तो उसमें रश बहुत होता है, तो जो पोर्टल है उस पर भी बहुत प्रेशर आता है, तो वो चल भी नहीं पाता है। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो गए हैं आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के फ़ायदे ये भी हैं कि जो आपका चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो मिल जाएंगे और आप लेट फीस से बच जाएंगे। और जहाँ तक असाइनमेंट्स की बात है, मैंने ये विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे भी दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो कई बार विद्यार्थियों को ग्रेड कार्ड पब्लिश होता है रिजल्ट में, और कभी कभी वो कंप्लीट किए होते हैं जो स्टेटस पे दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में उनका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि उनके असाइनमेंट्स के सबमिशन नहीं होते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों को लिंक किया हुआ कि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अपने असाइनमेंट भर दिए हैं उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, ताकि जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दें आपके असाइनमेंट्स के मार्क भी अपडेट हो जाएं, अपलोड हो जाएं, और जो टर्म एंड एग्जाम उसका रिजल्ट आएगा तो क्लियर आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और व्हाट ही सेड एग्जैक्टली, डायरेक्टर एसएससी जस्ट सेड दैट देयर इज एग्जामिनेशन फी
of 200 rupees per course. You have to decide that how many courses you are eligible and for how many courses you are going to appear. University doesn't find a logic in getting a late fee, but due to any reason, if you are not submitting your exemption form in time, then definitely there is a regulation for that. But university, believe us, university doesn't want that you should give us the late fee. But for being late, you have to be really have to pay the late fee. That is one thing, sir. And second is that the late fee is perhaps 1,000 rupees, 1,100 rupees per after a specific date. Sir, what is your advice to the students on this particular count, where university is very, very proactive, pro-student, giving a large gap of exemption date? By that time, there is no fees is charged, and despite that, we are finding that there is still we find that the students are again applying with the late fee. What is your advice to the students? Well, a very nice question. Because this is actually university deciding a good practice, because we are having a good practice, that is. Because we try to motivate the student, you don't go for the fine. You should fill up your form within the stipulated time frame by the notice board. So इसके लिए तो हमें थोड़ा सा बच्चों के थोड़ा इससे परहेज करना चाहिए, because fine is 10 times high or 5 times high. So ये गुड प्रैक्टिस तैयारी करने के लिए दिया है, ताकि लोग स्टूडेंट ज़्यादा अलर्ट रहे. Why you should go for the late fine? Because उसके लिए समय, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, भारत भूषण जी ने, कि उसके लिए स्टिपुलेटेड टाइम हमें दिया जाता है और ये महीने भर का भी समय तक मिलता है. वाई वी शुड गो फॉर द लेट टाइम? अब जिस दिन से दिया है, जस्ट यू कुछ बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट ओनली अपलोड करना पड़ता है आपका, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं. वो फीस भी वेरी नॉमिनल फॉर वन कोर्स ओनली 200 रुपीज़, और ज़्यादा 3 शब्द दे रहा है तो 600 रुपया. तो इसी के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है. सो हमें वी शुड नॉट गो फॉर द, ये हमारी यूनिवर्सिटी की गुड प्रैक्टिस फॉर अलार्मिंग द स्टूडेंट्स. हमारा ये इंटेंशन ये नहीं कि वी आर कलेक्टिंग मोर मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये इंटेंशन हमारा नहीं है. ये केवल स्टूडेंट्स को अलर्ट करने के लिए, से यू गो, यू डू योर ड्यूटी विद इन द टाइम. यही है, ये ऑनलाइन सिस्टम में यही चीज है. हर चीज को अपने ऑनलाइन सिस्टम में ऑन टाइम ड्यू कोर्स ही करना. सो थैंक यू सर. एंड डॉक्टर साहब, जब मैं सर को सुन रहा था तो 35 लाख विद्यार्थियों की बात कर रहे थे, और जब 35 लाख विद्यार्थियों की बात हो रही है तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि एक सत्रांत परीक्षा में कितने विद्यार्थी अमूमन बैठते हैं. एक 6 महीने के इम्तहान के बाद आप हर 6 महीने पे इम्तहान करते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत क्यूबरसम है. एक सत्रांत परीक्षा में अमूमन कितने विद्यार्थी अपीयर करते हैं और कितने एग्जामिनेशन सेंटर आप बनाते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं? हम अपने हालांकि ये बड़ा ही गोपनीय तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, ये जानकारी जरूरी है, हम अपने आप से जानना चाहिए. देखिए, ये डॉक्टर साहब गर्व की बात भी है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी है जी. इतना बड़ा एग्जामिनेशन सिस्टम को रन करना, ऑर्गेनाइज करना, और जो अभी सर बार बार क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है जी. जहाँ तक 35 लाख विद्यार्थी की हम बात करें, तो गर्व के साथ साथ मैं अपने विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट सेमेस्टर में अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे जून में, उस वक्त आज तक की इग्नो की हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड फॉर एग्जाम, दैट वाज 8.5 लाख. ऑलमोस्ट 9 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था. तो 8.5 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कराना, और वो भी पैन इंडिया, उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 800 हमारे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किए थे, जो पोर्ट ब्लेयर से लेकर के लेह लद्दाख तक, साउथ से नॉर्थ, और इधर कच्छ से लेकर के ईटानगर तक स्प्रेड थे. इसके साथ साथ जब हम ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसके साथ साथ मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊं कि हमारे एग्ज़ाम्स इंडियन लैंड पर ही नहीं होते हैं. हम अपने विद्यार्थियों के एग्ज़ाम, जैसे सर ने बताया, हम अब्रॉड भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट. जी, ये भी करते हैं.
प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, कई तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। और जहाँ तक इस बार की बात है, क्योंकि नंबर बड़ा है, इस बार भी जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई, this time also we are going to organize about 6.5 lakh examinees. So 6.5 lakh is also not a small number, is a huge number. Definitely, sir. जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था उसकी वजह यही रहती है कि अगर आप सही वक्त पर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे तो हमें एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड करने होते हैं जी। एग्जामिनेशन सेंटर जब डिसाइड करेंगे तो क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए तो उसमें हमें प्लान करने में आसानी रहती है। दूसरा, जो एग्जामिनेशन का मेन ध्येय है हमारा, वो यह भी रहता है कि 45 डेज में हमें अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर करने होते हैं। तो 45 डेज में हमें एग्ज़ाम भी, ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा एग्ज़ाम चलता है, उसके बाद हमें उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना होता है। तो विद्यार्थी अगर ज़्यादा नंबर में लेट फी के साथ ज़्यादा नंबर में जमा करेंगे तो थोड़ा सा प्लान करने में असुविधा होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो विद्यार्थी ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए, चाहे वो किसी भी वजह से लेट भी भर पाए, हम उनको एक्युमुलेट करते हैं और उनका रिजल्ट भी हम इन टाइम डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. And it's a very challenging task, as we all know, conducting examination of that gamut, that size, and from that across pan India, and not only pan India, we are going across the country also, wherever, when you are outside the country and you want to appear from the foreign country, and we have to do some formality in finding that you appear from that very country during the day, same time for the terminal examination. Dr. I would like to know that we are offering two kind of programs. There are few programs are online mode, few programs are ODL mode, and ODL mode has its own way of going ahead with the program. Online mode has its own way of going ahead with the program. जब examination की बात करते हैं, how the examination are conducted for these two different setup of programs. One is the ODL mode program and another is online mode program. So please just clarify us for our viewers that how we conduct the program, the examination for ODL mode programs, and how we conduct examination for online mode program. ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न डॉक्टर साहब आपने पूछा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग हैं या इस वक्त हमसे जुड़े हुए भी हैं, उनको ऑनलाइन और ओडीएल प्रोग्राम में दोनों सिनोनिमस लगते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं लगता। उनको लगता है कि ऑनलाइन है तो ये भी ओडीएल जैसा ही होगा, जबकि इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, उनकी सारी सुविधाएं, सारी प्रोसीजर्स ऑनलाइन ही होते हैं। वो ऑनलाइन कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे, उनके एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होंगे। अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो पेन पेपर एग्जाम भी दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर रिक्वेस्ट। ये सुविधा हमारे विश्वविद्यालय ने उनके लिए मुहैया कराई है। लेकिन जो हमारे ओडीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, उनके एग्जामिनेशन पेन पेपर में होते हैं। लेकिन बात यह है कि जो अब दोनों के जो एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म भी एक साथ भरे जाते हैं और दोनों का जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो भी एक साथ ही होता है। पहले हम ये अलग अलग करते थे, तो उसमें क्या रहता था कि हम हमेशा एग्जाम्स के प्रोसेस में ही टीचर्स हमारे क्वेश्चन में, असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अब हमने इनका फॉर्म भरने का और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक रखा है। जी सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। कुछ चेंजेस इसमें हुआ है। जैसे अभी तो कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन सपोज एडमिशन लिया है या किसी ने ओडीएल में लिया है, अभी हमारी ये प्रोविजन ये भी आया कि जो ओडीएल में कोई बच्चा अगर एडमिशन लिया है, अगर वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते तो ही कैन सिट फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। ये हमारी अभी नया प्रोविजन चेंजेस आया है, क्योंकि कई समय क्या होता है, सपोज मेरा सेंटर यहाँ है, जैसे कर्नल से किसी ने बताया कि हमारा सेंटर यहाँ है, वो कर्नल के बच्चे अगर वहाँ जाके किसी रिमोट एरिया में वो चला गया जहाँ कोई सेंटर नहीं है, इन डेट केस वो ऑनलाइन मोड के लिए अगर अप्लाई करेगा तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी वो दे सकता है। ये प्रोविजन अभी आ गया है, इससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जैसे हम
सिंगल बच्चों का भी हम ध्यान देते हैं। देखिए इग्नू इतनी, हम शुरू में बता रहे कि बिफोर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन हमारे कुछ बोर्ड है जिसमें कोई एनालिटिकल स्टडीज भी करते हैं, और इस एनालिटिकल स्टडी में इस साल अभी क्या हुआ, अभी फ्रांस में इस साल एक बच्चा ने एग्जाम दिया था फ्रांस में जी। जो उसने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया था फ्रांस से, पेरिस से, और उसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए हमने अपने एम्बेसी में वो एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो इसलिए हम इतना हर एक बच्चों का इतना यूनिवर्सिटी ख्याल रखते हैं। इग्नू की ये खासियत है जी। थैंक यू सर। एंड एज यू राइटली सेड सर दैट इग्नू इज रियली student centric university where the main focus of this university is how to help the students to get a right kind of teaching learning material, right kind of the study material, right kind of study centers, the academic support, and then a right kind of examination center where they can go and appear for the terminal examination of their own choice. As sir was saying that even if ODL students are there and if they desire that they want to appear from online examination, online format of the examination, they can appear in the online format examination. But for that, I think university has to get a request from you within a time prescribed time limit. सर यहाँ पे हमने एक छोटी सी बात की डॉक्टर साहब कि हमारे विद्यार्थी बाहर भी हैं, हमारे विद्यार्थी पैन इंडिया के अलावे बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ऐसे में वैसे विद्यार्थी जो फॉरेन कंट्री में हैं और हमसे जुड़ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उनका एग्जामिनेशन फी और हमारे ओडीएल स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फी दोनों एक जैसे हैं या दोनों अलग अलग हैं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने ये प्रश्न आपसे पूछा है। नहीं, ये तो एक जैसे हो भी नहीं सकते जी, क्योंकि जैसा हमने बताया कि हमारा 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं जी, जिसमें मैक्सिमम मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे सेंटर्स हैं। और अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में जी, हमारे जो सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स, वो इस्टेब्लिश होने की प्रक्रिया है। जहाँ तक आपने एग्जामिनेशन फीस की बात की जी, वो जो इंडियन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है, वो अलग है, और जो बच्चे बाहर हैं, अब्रॉड हैं, उनकी डेफिनेटली अलग होती है। उनके एग्जाम एडमिशन की फीस भी अलग होती है और एग्जामिनेशन फीस भी अलग होती है। सो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर कि मतलब ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम 200 रुपये में एक पेपर एग्जाम दे रहे हैं। संभवतः ये 4, 5, 6 गुना ज़्यादा होता होगा उनके लिए। और सो दिस इज a very right kind of information you have given to us, sir. एक और बात हमारे मन में आती है विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी ने एग्जाम दिया, आपने कहा कि हमारी ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के तहत आप 45 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं जो आपने मुझे रिजल्ट दिया है। आपने कहा कि आपने मुझे अंक दिए 35, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें हमें आना चाहिए था 65। हमें क्या कोई ऐसा सिस्टम है क्या जिसमें कि मैं आपके पास आकर के आग्रह कर सकूं कि हमारी जो कॉपीज थी उसको आप फिर से देखें, या हमें एक बार फिर से देख करके हमें बताएं कि नहीं हमें 35 ही आना था, 65 नहीं आना था? ये कोई ऐसी सिस्टम है क्या विश्वविद्यालय के पास? बिल्कुल सब ये देखिए, ये सबका फंडामेंटल राइट्स है कि मैंने एक पेपर दिया, एग्जाम दिया और मेरा अच्छा गया, लेकिन मेरे मार्क्स ऐसे नहीं आए। तो डॉक्टर साहब ये बच्चे जनरली, हम भी करते थे जब हम स्टूडेंट थे, लेकिन देखिए ये टू वे ट्रैफिक होता है। एक तो जो एग्जामिनर कोई क्वेश्चन, कोई आंसर स्क्रिप्ट इवेल्यूट कर रहा है, उसका माइंडसेट, और सच में उसने अगर अच्छा लिखा है तब भी उसको कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे भी आते हैं। तो ये % टू % वेरी करता है। जहां तक बात आपने बताई कि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो क्या उसके पास कोई ऐसी विंडो है कि वो ये कह सके कि मेरा ये आंसर्स दोबारा से इवेल्यूट किए जाएं, जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन प्रक्रिया, उसके लिए बिल्कुल है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं और मेरी आंसर स्क्रिप्ट ठीक से इवेल्यूट नहीं हुई है, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर विद्यार्थी को अप्लाई करना होगा रिवोल्यूशन के लिए, और उसका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो रिवोल्यूशन के लिए भेजा जाएगा। और मैं अपने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए बता दूं कि जिस इवेल्यूएटर ने उनका पहले आंसर स्क्रिप्ट इवेल्यूएट किया है, ये वो मान के चलें कि वो दोबारा उनके पास नहीं जाता है, वो हमेशा दूसरे इवेल्यूएटर के पास जाएगा,
तो अगर किसी विद्यार्थी के कम मार्क्स भी आ गए तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो दूसरे एग्जामिनर ने किया है और रीवैल्यूएशन के बाद कोई विंडो नहीं है। अच्छा, वो ये अगर उनके मार्क्स पहले वाले ज़्यादा थे तो ये उनके पास लिबर्टी है कि वो मान लें, लेकिन रीवैल्यूएशन अगर एक बार हो गया तो देन देयर इज नो स्कोप कि वो उसको भी चैलेंज कर पाए। जी। सो ये एक बहुत बड़ी देखा आपने कि ये विश्वविद्यालय किस तरीके से उस छोटे लेवल पे भी जाकर के विद्यार्थी हित में यह निर्णय लेती है कि विद्यार्थियों को एक जेन्युइन मौका देती है कि वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर अपनी वो परेशानी को विश्वविद्यालय से साझा कर सकते हैं और उसके लिए छोटी सी फीस होती होगी। उस फीस को जमा करने के बाद आपकी कॉपी का रीवैल्यूएशन होता है। 600 रुपीज है। 600 रुपीज सर बता रहे हैं और हम उनसे फिर से पूछेंगे तो उसका रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन डजंट मीन द रीकाउंटिंग, इट इज अगेन इवैल्यूएटेड afresh by giving a blank to the marks you have got in your previous evaluator, and that's how we call it re-evaluation. And ऐसा देखा जाता है कि एट टाइम्स विद्यार्थियों के जो नंबर थे वो बढ़ गए हैं, कभी कभी विद्यार्थियों के नंबर घटते हुए भी देखा है। लेकिन यहाँ पे हमने ये विश्वविद्यालय ने ये देखा है कि इस तरह के सिस्टम को कैसे देखती है, उसकी विश्वविद्यालय की अपनी एक प्रक्रिया है जिसको हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली we are here for the students to see that how students are going to be given a due justice of the kind of effort he has put in while he is answering, he is attempting the questions paper while he is coming for the term and examinations. तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक और बात जोड़ना चाहता हूँ जी। जनरली जब हम भी विद्यार्थी थे सर, लगता था कि टीचर ने ठीक से एग्जाम हमारा पेपर चेक नहीं किया। ये बात नहीं होती है। इग्नू में भी जितने भी इवेल्युएटर्स हैं वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स हमने अपॉइंट किए हैं अक्रॉस द इंडिया, सब जगह हर एक रीजन सेंटर्स में से हमने अपने एग्जामिनेटर्स अपॉइंट किए हैं और वो सारे एग्जामिनीज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स हैं अपने अपने डिसिप्लिन्स में जी। और वो ही हमारे आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी ये कहते हैं जब उनको आंसर स्क्रिप्ट मिल जाती है कि मेरी आंसर स्क्रिप्ट पे एक भी टिक नहीं है, कहीं कोई मार्क नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बस ऐसी आइडिया से लिख दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और हमारे कुलपति महोदय हमेशा कहते हैं ये एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जब हम जुड़ते हैं तो किसी के नुकसान की बात नहीं करते, वो भी डेलिबरेटली। ऐसा नहीं होता है। इस बात की हम बहुत ध्यान रखते हैं कि लेकिन आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर साहब का अलग हो सकता है, सर का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मैं हर सीट पर टिक लगाऊंगा, मार्क्स लिखूंगा, हो सकता है डॉक्टर साहब ना लिखें। तो इस बात की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से किसी क्वेश्चन के आंसर ऐड नहीं हुए, तो उस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। और ये बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि ऐसी मिस्टेक हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। सो थैंक यू सर, एंड वी आर कमिंग टू द time of the program. The watch is saying that we have only 1.5 minutes left with us. So I would like to just say that after the evaluation, we declare the result within 45 days, as Director SSC has just informed, and be rest assured this is a foolproof system of examination. And before we conclude, we would like to again go back to Professor Hazarika sir, and would like to give your suggestion to the students because our examination is going to start from December 1st, and so how you are going to advise them, sir? हेलो, मैं सभी स्टूडेंट्स से यही विनती करना चाहूँगा कि आप सबसे आग्रह भी है कि आप जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास प्रोवाइड किया गया है, सारी स्टडी मटेरियल आप ठीक से पढ़िए और कुछ रेफरेंस भी पढ़ लीजिए। बिकॉज एग्जामिनेशन दिस इज़ फॉर यू, वी आर कंडक्टिंग फॉर यू, because this is your responsibility to how to you appear the examination with a full preparation. So हमारी तरफ से यही है कि आपको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आप सभी अच्छी से तैयारी करिए और इस पर जो गाइडलाइन जैसे आप स्पष्ट हैं, आप एग्जाम देंगे विद इन 45 डेज आपको रिजल्ट मिलेगी। ये इग्नो की प्रतिबद्धताएं हैं, हम विद इन टाइम फ्रेम हम हर चीज काम को करते हैं
और एवोल्यूशन के बारे री एवोल्यूशन के बारे में भी आपको बताया गया। अगर कोई डाउट है किसी प्रकार की तो आप ये आपकी आज़ादी है, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। तो मैं आपसे मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी के साथ आप एग्जामिनेशन अपेयर हो जाओ, बिकॉज ये बड़ी सिस्टम एक इग्नो की एक बड़ी सिस्टम, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और best wishes. Thank you, sir. And this is the opportunity to thank once again Professor Hazarika, Dr. Bharat Bhushan ji, and entire team of EMPC, those who are working behind us, the camera person, the program, the producers, everyone, those who are taking this program to the viewers. So with the hope and with the assurance that we are going to meet again in the same program, Aapka Vishwas, Hamara Prayaas, next time. And till such time, take care of yourself. अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और उत्सव को खूब मनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters programs is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC. Welcome viewers. I am Professor Ashish Agarwal,
Program Coordinator for the program Postgraduate Certificate in Inventory Planning and Warehousing System. This core program has 3 theory courses and 1 project. The one course, which is Introduction to Inventory Planning and Control. Today I am going to cover the block 1, unit 1. My whole session is divided into 2 parts. In the first part, I will focus on the various issues about the inventory and inventory control. In second session, we will more concentrate on the various other aspects, just like scope of inventory, planning and control. What will happen, or what are the indicators of good inventory control, and what are the indicators of bad inventory control. So let us first see what we are going to cover in our 2 sessions, both sessions. The topic of today's teleconferencing, today's session, is basic concept of inventory. But we will also cover definition of inventory, functions of inventory, factors affecting inventory, then inventory control, and we will also focus that in any manufacturing company, what would be the role of inventory control. So let us start with the definition of inventory. There are so many definitions are given, even in the Google, in the Wikipedia, even your books. But the most common, basically if you just think, you will find that inventory is nothing but a listing of items. But as an engineer or as a manager, when somebody asks you, or you want to explain to somebody who is not a technical person, not a professional person, as a layman, so you will say that inventory is a collection or the gathering, or you can say a subset of different items which are required for the future use. The inventory is kept because you want to produce something, goods. For that you need the inventory. Similarly, services, just like hospital, banks, school, where you keep the inventory so that it can be used as and when required. In my earlier sessions, we have also told you that how in a household, as your wife, your sister or your mother keeps a set of inventory of vegetable, fruits, flour, spices, so that whenever there is a need, this can be used from the collected inventory. So if you just see the slide, that the term inventory refers to the raw material used in production as well as the goods produced that are available for the sale. So here you will find 2 things. One is a raw material, and second is there are some items which are needed for the production or the manufacturing of that particular goods, for which you have collected the raw material.
Now the second question which may arise in your mind, that what are the objectives of inventory? Why we should keep the inventory? The first objective is to maintain the overall investment in inventory at the lowest cost, lowest level, and it should be consistent with the operating requirement. What does it mean? That if you just see the past, before 1990, the Indian companies as well as foreign companies, they used to keep a huge amount of inventory, because keeping the large amount of inventory is the sign of wellness or the wealth. If a company does not have inventory, he will be treated poor. The company which holds 1 year inventory or 2 year inventory, he or she can be a very rich manufacturing company. So basically the first objective is that you don't want, because if you keep the inventory at your warehouse, that means you are tying up the capital, because otherwise it can be used somewhere else. So inventory should be kept at the lowest as per the requirement. Second thing, it should not be much and it should not be less. There should be an optimum quantity. Now let us focus on the second objective. Basically, what we are doing in any company, we supply the product, raw material, sub-assembly, semi-finished good to its user as per requirement, and just focus on two terms, right time and at right price. So what we are doing, with the help of inventory, we are trying to supply the goods which are required at a certain place. So what is our purpose? We want to provide the material or the goods at right time, at right price, because nobody wants to purchase a product which is unreasonable high cost, which has the unreasonable high cost. Because whenever even you go to the market as a manufacturing company manager or something, you will always like to compare with two or more companies, and then you will give a reasonable quotation for purchasing that particular goods. So I have just kept 3 or more objectives, and I have kept in each slide so that you may be able to see and does not confuse with each other. So let us see about the third objective. Basically what we want. Objective is that there should not be any inactive material, there should not be any waste, there should not be any surplus or scrap or obsolete. If they are present, they should be at the minimum level. And the second important objective is to minimize the holding, replacement and the shortage cost of the inventory, and maximize the efficiency in production and distribution. So here the holding cost means that whenever you purchase anything, whether it is a small quantity or large quantity, you have to keep in warehouse. If it is consumed within 1 day or 2 days, then it's all right. Otherwise, the inventory has to wait for its own turn.
that is called that we don't want. We don't want any surplus, we don't want any waste. So the purpose or the objective of inventory is that there should not be any excess amount of inventory. Another thing is that holding cost should be minimum. That when you keep something at your warehouse, you are investing, you are paying something, just like rent of the warehouse. And even if it is your own warehouse, then also you have to spend on certain other activities, just like insurance, electricity, labor cost. All these comes as under the umbrella of the holding cost. Another important objective is to reduce the risk inherent in treating inventory as an investment and for other less return investment. What does it mean? That if you keep the inventory, there are two types of risk are involved. If it is used within the time frame, there is no issue. But if it does not consume, either it gets deteriorated physically or it may not be of any use after certain period. So these are the risks. Whenever somebody is purchasing or procuring the inventory for its own manufacturing company, then most likely there are two risks. Either it gets deteriorated with time or it will not be of any use after certain period of time. The example is your computer chips or mobile chips. Even mobiles, that after certain period they will be of no use. Then if you purchase in a bulk quantity, it is a sheer waste of the money as well as sheer waste of the human resources. Now we will focus on the functions of inventory. There are 5 functions of inventory, just like first is inventory investment alternative. Very simple. There is a one term that is called marginally economic cost. So it should be at the optimum level. Second function is that we want the geographical specialization. What we need in some geographical place, the labor cost is less. Or take the simple example of textile industry or some other cloth industry. There you need a humid nature of atmosphere. So you need to take a geographical specialization. Third function is decoupling. Fourth is balancing supply and demand. And the fourth or the fifth one is safety stock. In decoupling, what we do, we try to keep the inventory, or we want to reduce the dependence on the main machine. How you will reduce the dependence? We keep the inventory so that if any machine is breakdown or under breakdown condition, the flow of the material should not be stopped. That is the important point for a decoupling. I will explain more in the coming slide. Fourth function is balancing supply and demand.
You will appreciate if supply is more, demand is less, there is excess inventory will be generated, which may be obsolete after certain period of time. Second condition is that when your demand is more, supply is less. What will happen? There will be unsatisfied customer. And the last one is your safety stock. At present, what we are studying is a functions that how the different functions inventory can perform. So fifth one is safety stock. Safety stock means that you have a maximum amount, you have a minimum amount. Then what you are doing? You are still keeping a inventory because of the uncertainty in the market, uncertainty in the transportation, uncertainty in the labors. So you keep a safety stock that will be used in the emergency or when there is a stock out condition. So these are the 5 different functions of the inventory. Now we will see that what are the factors which affects the inventory planning and control. There are 2 main problems, that how much to order and when to order. If you just analyze these 2 points, how much to order, that means what is the quantity, what quantity you should order. Second, when, that is the schedule. So first is your quantity and second is your schedule. Both are very important, because that if the quantity is important, then when the quantity will reach to the manufacturing unit is also very, very important. So how or what quantity and then when, these 2 are the both. So these are the 2 main, the whole inventory planning and control based on these 2 issues. There are some other parameters on which inventory depends, inventory control. The first one is your purchase price or the production cost. I have used both the term purchase price or the production cost, because inventory can be either procured from the market or it can be produced inside. Second important part is your selling price, procurement cost, carrying or holding cost. The holding cost, which I have explained, is also termed as carrying cost. The fifth one is your shortage cost or stock out cost. When your supply is less than the demand, then you will face shortage. Cost of operating the information. This is a new point. That means if you are using mobile, if you are using internet, if you are using other means, then you are incurring the cost, because the process, you are processing the information which are available in the system. So these are the basic some economic parameters which are also served as the functions of the inventory. Another important parameter is your demand. Demand is of 2 types. First is your deterministic, second is your probabilistic. Deterministic demand is that demand where quantities needed over a subsequent period is known with the certainty. That means suppose you are working in a factory and you know that you have an order of 4 or 5 cars
your demand is certain. You have to prepare all the activities as per the 4 cars. Now, second type of demand is your probabilistic demand. Under the probabilistic demand, the requirement over a certain period is not known. Suppose in the car also, we do not know the customer will ask for which color, or customer will ask which variant. So this is a probabilistic demand. So one is your deterministic and second one is your probabilistic demand. Similarly, another function is your ordering cycle. There are 2 types. One is your continuous review and second one is your periodic review. Continuous review is that review that you continuously following up that what is the level of inventory, and whenever there is a less, you fulfill. It may be after 3 months, it may be within 1 month, or it may be after 2 months. Second type of order cycle is your periodic cycle, where you do not monitor continuously. What you will do after certain period, just like it may be 1 week time, it may be 15 days time, it may be 3 weeks time. You take a review and as per the information of the review, you provide the quantity. Another important term or the function is the delivery or the lead time. How it affects the inventory. When the need of the material is felt, an order is placed. It may be delivered instantaneously or it may require some time before the delivery is effected. So, how you will define the delivery lag or the lead time? Basically, it is the time between the placement of the requisition for an item and its receipt from the actual use is called as the delivery. That means if you are preparing an order, so the time starts from there and it goes to the vendor and vendor will supply, and when you will receive, the time period in between is called as the delivery lag or delivery time, lead time. So basically delivery lead time, what are the different components of delivery lag or delivery lead time? There are 4 components. One is your administrative lead time. Second one is your supplier lead time. Third one is your transportation. And fourth one is inspection lead time. If you just see all the 4, the first 2 are at the supplier side. The second one, the third one is with the transportation, and the fourth one is at the buyer side or at the manufacturer side. So these are the basically delivery lead time. So in today's session, we have covered about the definition of inventory, what are the various objectives of the inventory. Then finally we have touched what are the functions of inventory. And if I recall, there are 2 functions. One is how much is the quantity and when it is required. So for
giving the reply of these two, we are studying the various factors which are affecting the inventory, just like lead time, supply and demand, and various others. I trust that this my first session must be useful and will generate a motivation among you so that you may start studying inventory planning and control. Thank you. Thank you very much. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में हैं हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, चलिए समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में दाखिला लें। हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.ignou.in। Welcome viewers. We are presenting the concept of inventory, which is a part of your program, Postgraduate Certificate in Inventory Planning and Warehousing System. Within this program, we are taking the block 1, that is the basic concept of inventory. As you are aware that inventory is a collection or the list of items
which are stored or collected in anticipation for its future use. There are various types of inventory, just like raw material, work in process, finished goods, and maintenance, repair, and operations inventory. Now, there are various objectives of the inventory. The first, you may say that we want to match the demand with the supply or supply with the demand. Then another important that you don't want to make surplus inventory. That is why you have a inventory planning and control. There are various functions of inventory. For example, that you want to keep the investment at the lowest level. Then there are so many other terms which you should be familiar. One of the term is your delivery lead time, or in short you can say lead time. The delivery lead time or delivery lag or lead time constitute of mainly 4 lead times. Or in other words, you can say that lead time can be divided into 4 parts. Administrative lead time, which is nothing but you can say that at the manufacturing end, whenever you prepare some items, prepare a purchase order or some others, all these comes under the administrative. Second is supplier. You raise the purchase order, you have given, then the supplier, after making certain preparation, it will transport. So before transportation, whatever time a supplier is taking is called as a supplier lead time. After that, when the transportation begin, there is certain lead time. If it is nearby, it may take 4 hours or 2 hours. If it is in other city, it may take 1 day. So this is called the transportation lead time. And the final is that when the item comes at your end, you will like to have the inspection for the quality of that material. That is called as a inspection lead time. Please remember that the safety stock, which is an important component of inventory, is the function of lead time. If the lead time is more, then we keep the safety stock at the higher level. Another important term is your time horizon. That for how many days you are planning of inventory, or for how many days you want to control the inventory. The planning period may be finite or may be infinite, because you do not know if you are a consumer or make on order or make to order company, orders are coming and you are making. So the planning period may be infinite. But if you have a certain fixed item, suppose 100 cars or 100 scooters, 1000 mobiles, then your planning period will be finite. Mostly inventory planning is in an enterprise is done on the annual basis. That just like as a financial year, beginning from March to February, you make the order and you make the planning for the inventory.
Another important term is your economic order quantity. If you recall that the functions of inventory, how much inventory is required and when it is required. So if I try to give you answer of how much, then I have to take the help of the economic order quantity. In short, it is called EOQ. So EOQ permits lowest possible cost per unit, and it is the most advantageous and economical. Before going into detail about the EOQ, one should understand various terms which will come in the inventory control, just like maximum quantity, minimum quantity, reorder point, lead time, and buffer stock and the stock out. Let us understand one by one. First is your maximum quantity. As the name indicate, it is a quantity which you require for fulfilling the needs, but it is the maximum quantity which can be accommodated at your store. Please remember, whatever I have said, it does not mean you fill the whole your warehouse and you say that it is the maximum quantity. Because you remember one of your objective that you want to keep the waste at the minimum level. So considering the investment, you have to keep a quantity which is known as maximum quantity. Now, second comes after this is your minimum quantity. As we have explained, maximum quantity, it is the topmost, while the minimum is the lowest limit. Here also you remember, it represents a reserve or the margin of safety. That it is the quantity which consider the margin of safety and the safety stock. Third one is your standard order. If you just concentrate on the name, it is a standard order. That means you have calculated the economic order quantity. On the basis of that, you have prepared a quantity which can be repeated each and every time. That particular quantity comes and said as a under the standard order. Another term which is coming before we move to the economic order quantity, it is the ordering point or the reordering point. If you see its English meaning, ordering or the reorder point. Ordering means it is a point where you make a order, or reorder point that where you repeat the order, that comes as a reorder point. So this point or the quantity represent the quantity required to ensure that there is a adequate material for the interval between the placement of an order and the delivery. And when the balance falls to this level, it indicates that new purchase order is required.
if you want to analyze these 2 points, that reorder point is a point when you make the order and it should reach at your place when you are reaching to a minimum quantity where there is no chance of stock out. Please remember, it should reach to the minimum quantity, but with the condition that there is a safety stock. So that is called the reorder point. At reorder point, we place the order and the quantity is calculated in such a way that it consumed during that period between the placing the order and receiving the delivery. As we have explained the delivery lag or the lead time, similarly, if I again repeat the lead time, basically it is nothing but the time taken for the stock to reach from reorder point to the maximum point. That at reorder point we make the order, it reaches. So the time between the order placing and receiving of delivery is called as the lead time. This is in our other word, time between placing the requisition and receiving the stock, and in the between all the activities are involved. Even inspection are involved and keeping at warehouse is also involved. Another important term is you should know, that is the reserve, safety or buffer or the stock. That means your safety stock level should be decided very carefully. If the level is low, there may be chances of a stock out condition. If level is high, that means you are blocking a capital. We have understood the objectives of inventory, functions of inventory. Now we will come to the objective of inventory planning and control. There are some objectives which may be common, but here objectives are being defined considering the inventory planning and the control. The first objective is to minimize the capital investment by eliminating the excessive stock. That is also the objective of the inventory. Same thing is also happening with the inventory planning and control. Another important objective of inventory planning and control is to ensure the availability of needed inventory. That whatever is required, these are available at the warehouse or at the shop floor uninterrupted, so that your production should be smooth and you should be able to meet the customer demand. Another objective is to provide the scientific basis for planning, as economic order quantity is a scientific method. Similarly, ABC classification, VED, vital, essential and desirable, all these comes as a scientific basis and they are required for planning. Then the demand fluctuation should be controlled with keeping the reasonable safety stock. Now you just see
and ask yourself why we require inventory planning and control. What is the purpose of inventory planning and control? It keeps inventory accurate. That means items which are coming from the vendors or the suppliers, the inventory planning and control personnel will like to keep a watch on the inventory. So what it is doing, it is making the inventory accurate. Another important, it enables JIT. JIT is nothing but the just-in-time philosophy. It is the philosophy which is used in the inventory management. Third importance is that when you minimize the waste, the quality management or the quality control will go up. Minimize the administrative workload. When everything is standardized, then you are minimizing the administrative as well as administrative workload. And the last one is you will also reduce the risk of loss. Risk of loss means that if you purchase certain items, loss is in two types. One is your depreciation loss. It can be used other places. Third one is if your supply is less, demand is more, then you have a loss of your goodwill. So all this comes under the importance of the inventory. Now there are certain limitations of the inventory. Till now we have studied objective, functions, importance, purpose. Now let us see what are the limitations of the inventory planning and control. The first and the topmost, that there is a risk, there is a business risk which cannot be eliminated, but it can be minimized. Reduction in inventory will reduce the investment as well as reducing the cost will further conflict the reduction in inventory. That means if you reduce the inventory because you want to keep the cost as lowest level, then what will happen? Your production will not be smooth, because each time there is a chances that because of lack of inventory your production will stop. Third one is your expensive. Every activity in inventory planning and control is cost effective. Sometimes it becomes expensive when you use software. When it is very difficult to manage the shop floor, then it becomes expensive also. Fourth one is when there is a variety of items, then it is very difficult to manage. Now let us see that how you will classify the inventory. First classification is on the basis of dependent or independent demand, and the second one is based on the nature of use, just like raw material, work in process and the finished goods. Now what is independent demand or dependent demand? In case of independent demand, demand does not depend on any other things. Basically, it is independent. For example, if we want to purchase
manufacture 10 cars. So definitely they are depending upon the customer demand, but manufacturer, whatever he decided is independent of any other demand. So it is called as the independent demand. Dependent demand depends, just like if we have decided to make 10 cars, then number of tires will depend upon the number of cars, number of glasses will depend, number of steering will depend on number of cars. So they are called as a dependent demand because they are depending on the particular demand. Now these are the 4 types of inventory. I have also touched in some place in my session that there are 4 types of inventory. One is your production inventory. When you make certain items at your shop floor, that becomes the production inventory. Second is your work in process inventory, when it is not complete in nature but some part has been manufactured and some part is under repair. So it becomes a work in process inventory which can be used in the coming stages. Third one is your finished good inventory. That means your goods are ready and they are waiting for the dispatch. So it is called as the finished goods inventory. Fourth one is your MRO. As I told you, MRO stands for maintenance, repair and operation inventory. These are the inventories which are required for the production of the items. Another important, which I always receive a call from the student, that what is meant by transit inventory. Let me explain. It is sometimes also called as a pipeline inventory. Basically, for example, if a manufacturer decided to purchase certain items from the vendors. Now vendors is at Bangalore and the manufacturer is at the Gurgaon. After certain processing, the vendor or the supplier dispatched the inventory to the for Gurgaon with the help of a various trucks. So the inventory is in transit. It is neither with the supplier nor with the manufacturer, or it is not with the person who is releasing, or it is not with that person who is asking. So it is in between. That is why it is called as a pipeline inventory or as a transit inventory. Another important is very similar to the safety stock. Safety stock we keep as a function of lead time, while buffer stock is only as a keeping in anticipation with the uncertainty that may arise in the future. So till now what we have covered? We have covered about the various forms of inventory, what is the importance of inventory, what are the various limitations, because everywhere you will find that everybody talks what are the advantage, what is the importance of inventory, but in your unit you will also find what are the limitations. But as a manager, you should always try to overcome all these limitations so that you may
in a better position to manage the inventory. Please remember that this is the one unit which I have covered, or you can say 2 units which we have covered for your course MWR01, which is a part of your program in PG certificate in inventory planning and warehousing system. I trust that my both session will be useful to you and will motivate you further for the studying, so that you may get quite good knowledge and capacity building in inventory planning and warehousing system. Thank you. Thank you very much. Hello, how are you doing? Hope you are keeping well. And I think that you have already attended 1 or 2 video lessons in this particular program of what you are attending, that is the design and facilitation of e-learning courses.